क्वेश्चन इज डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यानी कि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, नो मोशन, रेस्ट पे होते हैं अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ना लगाया जाए। तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलूँगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है। कंडक्टर को आप कंसीडर करो सिंपली ऐसे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रैंडमली मोशन में करते रहते हैं, जैसे तैसे, इधर उधर, जहाँ कहाँ, ऐसे ही बस रैंडमली मोशन करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है तो इस कंडक्टर का बिहेवियर कैसे चेंज करता है? तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे अब एक डायरेक्शन में अलाइन होकर मोशन करने लगते हैं। ये इधर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये होता है चेंजिंग। ये फ़र्क आ जाता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है फिर भी ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब रैंडम मोशन करते रहते हैं। आप इनका ट्रैजेक्टरी नहीं बता सकते किधर जाने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट आंसर इसका फॉल्स होगा। Well, hello students, now we are going to see this question. All resistances in the diagram are in ohm. Okay, find the effective resistance between point A and B. Okay, we need to find the effective resistance between this point and this point. So it is very easy question. Why? Because we have to start solving from the right itself. Okay, so from the right, if you see, what will you see? That these all are connected in parallel basically. So what will we do basically? So firstly we'll solve this branch, okay, this of this resistor and this resistor. So if you see, I'm drawing this resistances again so as to make a clear vision. Okay, let's suppose this is point A and this is basically point B. Okay, so there is a 3 ohm resistor between them. Okay, and basically there is a 6 ohm resistor over here. Okay, and there is a 3 ohm resistor again over here. Okay, and finally there is a 6 ohm resistor again over here and 3 ohm resistor again over here. So this is a very a little means bad diagram, means it doesn't look very good. So we have to solve it very carefully in order to make no errors. So this is basically what is the question. Okay, so we are going to see these diagrams now. Now we are going to put all the values, that is, this is over here 3, this is over here 3, this is over here 6, and again this is over here how much we need to see it. This is over here 3, okay, again, and basically this over here is 6, again this over here is 6, this over here is 3, 6, 3 and 3. Okay, so this is basically our diagram, we drew it. So why did I draw this diagram? So as to make you understand more clearly. Okay, so if you see these two resistances, okay, from this point to this point we need to find the resistance. So if you see this 3 ohm resistance, okay, and both the 3 ohm resistances which are over here and over here, okay, so they are connected in series, so we will just simply add it. Okay, so we can replace this resistance by one series resistance, that is of 6 ohms. Okay, so we can replace it by 6 ohm resistance. So you can see this 6 ohm now, this 6 ohm and this 6 ohm are connected in parallel. Okay, so since they are connected in parallel, so firstly what we did V1 will be basically, let's write R1 will be equal to 3 plus 3, which will be equal to 6. Okay, R1 is equivalent resistance between these points. Okay, R, let's suppose we name point C, D, E, everything. Okay, this is point C, this is point D, this is point E, this is point A, B, it's already written, so let's not go there. So RCB, RAC actually, RAC will be equal to this, so we have our point C over here. Okay, and basically RAC total,
Okay, total will be equal to what? Basically, our AC is already found out to be 6. So C, this is D, this is F, E, and basically this is F. Okay, so I named it correctly, I guess. So D, E, F, so basically this point D, this point is not D, this point is C, this point is D, and this point is E. Okay, so now what we are going to do, we are going to find the total resistance between A and C. So total resistance between A and C, total, okay, will be equal to what? Will be equal to this parallel connections value, okay, which will be equal to 6 into 6 by 6 plus 6. This is the parallel resistances formula, okay. So this will come out to be what? This will come out to be 3 ohms, okay. So we can replace this with a 3 ohm resistor, okay. So we are going to replace it with a 3 ohm resistor now. So we replaced it with a 3 ohm resistor. So now this 3 ohm and 3 ohm are again in series. So you can see over here now R AD will be equal to 3 plus 3, which will be again equal to 6. Okay, so this will again come out to be 6. Okay, we are going to put one resistor which is of 6 ohm. Okay, so this is 6 ohm resistor. So again this 6 and 6 are connected in parallel. So we did one calculation for 6 and 6 which were in parallel. So RAD total will be equal to what? Basically it will be equal to 3 ohm, because it will be this same calculation. Okay, same calculation. So again we will now replace it by a 3 ohm resistor. Okay, so we will replace it by a 3 ohm resistor. So if you replace it and again do it, so it will be a very easy task for you. Now again you can see there is a 3 and 3 connected in series. So again you can do the same. Okay, so if you see over here, again 3 and 3 are connected in series. So R A E will be equal to again 6, because it will be same as this one. Okay, same as this one. And again we will replace it by a 6 ohm resistance. 6 ohm. So again this 6 and 6 are connected in parallel. So RAE total will be equal to what? It will be equal to 3 ohm. Okay, which will be same as this calculation. Okay, so we will replace it finally with a 3 ohm resistor. 3 ohm resistor. Okay, so this 3 and 3 are again connected in parallel. So what we'll have over here is that we'll have simply a 6 ohm resistor. Okay, so this is basically the shortest circuit we are getting. Okay, now we are gonna do finally R equivalent AB will be equal to 6 into 3 by 6 plus 3, which will be equal to 2 ohm. Okay, so our answer will be 2 ohm. Okay, so this is how we reduce the circuit and found out the answer. Answer is equal to 2 ohm. Okay, thank you. If each of the resistance in the shown network is R, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इस नेटवर्क में जो भी रेसिस्टेंस है वो सारी की सारी R है, R के इक्वल है, देन व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो हमें बताना है कि A और B के बीच में कितना रेसिस्टेंस होगा. तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है. फिर से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि पॉइंट P और Q के अबाउट, ठीक है, इस वाले रेसिस्टर के नेटवर्क को आप उस साइड ले जाओ. मतलब कि ये आपके राइट साइड में है, ये वाला नेटवर्क जो A से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको आप उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ. तो आपको क्या दिखेगा? ये नेटवर्क पॉइंट A ऐसा है, फिर एक रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे, फिर एक रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ, ये पॉइंट हमारा Q है, ये हमारा P है, और फिर ऐसे एक P और Q के बीच में रेसिस्टर कनेक्टेड है. ये हम कह रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या? ये पॉइंट हमारा A हो गया. अब हमारा जो बच गया, इस वाले पार्ट को तो उठा के लेफ्ट साइड में रख दिया, तो बच गया जो पार्ट वो आप ड्रॉ कर लो. तो ये आपका ये ऐसे बचता है, और ये पॉइंट हमारा B है. ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से. और सारी की रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि R के इक्वल होगा. ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि इन दोनों का रेसिस्टेंस का जो रेशियो है वो R/R यानी कि 1 है. और इस साइड PQ के राइट साइड का जो रेसिस्टेंस है दोनों, उनका भी रेशियो क्या है? R/R यानी कि 1 ही है. तो दोनों जब रेशियो इक्वल होता है
तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा ये ब्रांच से करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। अब जब किसी रेसिस्टेंस से कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि वो रेसिस्टेंस यूजलेस है उस सर्किट के लिए, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है आर, फिर एक रेसिस्टेंस है आर, और ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट हमारा ए, यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस, फिर से एक रेसिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट हमारा पी है, और इन सभी रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड सर्किट। तो अब आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे एक ऊपर में जो ब्रांचिंग है उसमें ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा ऊपर वाले ब्रांच में, नीचे वाले ब्रांच में भी इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2R और 2R आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, यानी कि आर ए बी जो हो जाएगा, जो पैरेलल में हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो यहाँ पे लगा लिया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट R के ही इक्वल आ गया। Hello students, in this question given a copper wire is stretched to make it 0.01 longer, means its length is become increased by 0.1%. What is the percentage change in its resistance? We have to calculate the percentage change in resistance. Let's solve this question. Okay. Assume the initial resistance will be R, and let's say the initial length is L. It is L. So if it is increased by 0.1%, this means its final length will become 1.001 times of L, 0.1% increase. Okay. Let's say its initial area of the wire is A. So first we have to calculate the final area here. Okay, in order to calculate the percentage change in resistance, formula is resistance final minus resistance initial final resistance minus initial resistance upon initial resistance into 100. Okay. So here we have initial resistance is rho L by A. Let's say it is equal to R. Okay. We have to calculate our final resistance. So final resistance will become rho L final upon A final. In order to calculate final resistance, we have to calculate final area first. So by volume conservation, we know that volume is constant. So by volume conservation, we can say that initial volume equals to final volume. So what is the initial volume? Area into length, initial, and final volume, area final, and final length. Final length is 1.001 times L. So after calculating this, you will get the final area is A upon 1.001. Okay. So put this value in this equation, final resistance equation. So you will get the final resistance is rho L final is 1.001 L upon A divided by 1.001. You will calculate this, you will find that the final resistance equals to rho L by A into 1.001 whole square. Okay, you will solve this. You know that rho L by A is your R initial,
that we have taken R. So the final resistance will become R into 1.002. Okay, now we have final resistance, we have initial resistance. Let's calculate the percentage change in resistance. So percentage change in resistance, percentage change in resistance, the percentage change in resistance will become R final, that is 1.002 R minus R initial, that is R, upon R initial into 100. Okay, you will solve this, and here after solving this you will get this R will be cancelled out, this R will be cancelled out, it will become 0.002 into 100 and you will get 0.2%. This will be your final answer. Percentage in change in resistance is 0.2%. Thank you.